अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। आप कितना कितना दिया है? सो 1000 पर मंथ है। हाँ। तो लेकिन इसमें एक्सेप्शन सर्कमटेंसेस है, पिटिशनर जो है 80% फिजिकली जो बोथ आर्म्स और बोथ लेग से ग्रसित है सर। उसको क्रिश्चियन फेलोशिप जो एक ह्यूमैनिटेरियन संस्था है, वो एनजीओ, वो खाने पीने में सपोर्ट करते हैं। और हस्बैंड वाइफ दोनों 14-15 सालों से अलग रह रहे हैं, और ये भी एडमिटेड है कि वाइफ इंडिपेंडेंटली अर्निंग कर रही है। वाइफ ऑफ द पिटिशनर ने, हस्बैंड फादर ऑफ द पिटिशनर ने ये चीज एडमिट किया, वाइफ ने भी एडमिट किया। क्या कर रही है? सर कभी हॉस्पिटल में रसोइया का काम करते हैं और कभी मजदूरी करते हैं, मतलब काम अलग अलग करते रहते हैं। आपकी खेती किसानी नहीं है? सर खेती है, वो है 4,000 स्क्वायर फीट आया है वो, लेकिन वो मदर के नाम पे एंसेस्ट्रल। वो क्या हुआ? तो उसमें से अगर हिस्सा आप कब हुआ ऐसा आपके साथ एक्सीडेंट, कब हुआ? 2004 के बाद में सर। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 1000 रुपए को भी मना कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। ये अच्छा है कि ये हिरासमेंट में नहीं आए सर। हिरासमेंट में आप नहीं आए ना, बढ़ाने के लिए नहीं आए ना, मेंटेनेंस है ना? मेंटेनेंस जब बढ़ाने के लिए नहीं आया आपने, नहीं कुछ नहीं होता वो सब, खारिज करो इसको, हो गया। इन वन जजमेंट ऑफ द कर्नाटक एंड अरे वो सब नहीं देखते हम, मेंटेनेंस कुछ नहीं। आप वाइफ है सर, आई एम नॉट एबल टू। आप जानो, आपको काम जाने। सर अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है सर। तो निकला हुआ तो दो ना भाई, पैसा तो देना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? ये थोड़ी ना है। क्या है ये? कुछ नहीं होगा इसमें। 1000 रुपए दिया है, उसको भी अगर हम इंटरफेयर करें। सर 1000 रुपए है सिंस डेट ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद ठीक है ना? 1000 ठीक है, पर मंथ। बिल्कुल। अभी तो डिसेबिलिटी है, तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर ट्रक ड्राइवर थे, पढ़ाई लिखाई कैसे कोई कंटेंट तो अनस्किल्ड है सर। तो कहीं अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट में जाइए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी घर में पड़े रहते दिन भर। सर दोनों हाथ नहीं चलते, दोनों पैर नहीं चलते। अरे ऐसा कैसे नहीं होगा? संस्था वाले रखे हुए हैं सर, वो अपने एनजीओ के में। एनजीओ में कुछ तो पेमेंट करते होंगे ना? नहीं, वो सिर्फ केयर टेक करते हैं सर। ऐसा क्यों करेगी एनजीओ? सर क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर पा रहे, डिपेंडेंट है, फिजिकली डिपेंडेंट है। नहीं भाई नहीं, बहुत ही मिजरेबल अमाउंट डाला है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। लिख देते हैं आपके सबमिशन को, फिर खारिज करेंगे। सर मैं प्रोवाइड दी कॉपी ऑफ जजमेंट। दे दीजिए, हम नहीं देखना है, लिखना हो। बच्चा कहाँ है? तो बच्चा फादर के साथ रहता था, उसका भी केयर टेकर एनजीओ वाले ही करते हैं। वाह। स्कूल का जो पढ़ाना लिखाना है वो जो चाचा और जो फैमिली के रिलेटिव्स है वो कर देते हैं। ठीक है, उसमें से 1000 रुपए दे दो। है सर काम करता है क्या? एज क्या हो गया? बेटा बेटा अपने पिताजी को पालते हैं सर। ठीक है ना, तो क्या काम करता है? तो माँ को भी पाल लेगा, उसमें क्या है? माँ को भी साथ में लिया आओ। पाल ले सर, अच्छी बात है। तो बुला लो उसको भी, आपने आप बोलो कि हम अपने साथ रखने के तैयार है। इट में भी डायरेक्टेड। हम क्यों डायरेक्ट करेंगे? तो आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है, हम क्यों डायरेक्शन करेंगे? वाइफ जो है खुद ही सामने से छोड़ के 2004 के बाद चली गई थी। जब आप बोलो अभी रखने को तैयार, आप जब करते हो ऐसी होगी। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था सर 16 साल बाद, वो 2018 में फिर आके मेंटेनेंस के एप्लीकेशन। नहीं ठीक है, इसलिए 18 से दिलाया है सर, कोर्ट ने, इसलिए 18 से दिलाया फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दी एप्लीकेशन। लेकिन इतने साल सर वो खुद ही हमसे कांटेक्ट नहीं किया। वो अपनी की उसकी नाम थोड़ी जिम्मेदार है। और उसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि क्रुएल्टी की वजह से हम दोनों के बीच में आपस में नहीं पड़ती है, हम दोनों अलग। तो ठीक है ना, तो क्रुएल्टी आप ही की हो ना? सर दोनों के तरफ से है, कर्मों का फल है। हमें मतलब हमारा क्रुएल्टी फिजिकल डिसेबिलिटी के नाम से था। लिखो, पार्टी खारिज करो, हो गया। द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड प्रोजेक्ट क्रिमिनल डिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 1/2/2023 passed by the London Family Court, राजनांदगांव, passed miscellaneous criminal case number 207/18, by which the London Family Court has partly allowed the application under section 125 of the CRPC for grant of maintenance amount of rupees 1,00,000 रुपये per month from the date of filing of the application on 24/10/18. The brief facts as reflected from the record is said. The respondent wife moved in application under 125 of the Maintenance Act before the London
family court, mainly contending that immediately after, at the time of pregnancy, the mother-in-law and husband used to torture her for demand of dowry. Therefore, she has given birth in his matrimonial house. And uh, uh, when uh, when she has gone to his in-laws, it was found that the respondent is not living there. Applicant is not living, and therefore it has been. Therefore, she has lodged a application, moved an application before the police station, and on inquiry it was found that he is residing with another lady at Raipur. First off, the the respondent, the applicant, it is also case of the respondent wife that when the applicant son started joining the school, it was found, it was informed to her that he has taken away the child forcefully and has admitted him in the school wherein he has recorded the name of other woman as mother. Uh, Therefore, she has filed the application for maintenance. First up, the applicant has filed a reply to the said application contending that she was without rhyme and reason left the matrimonial house and that she was avoiding the she was avoiding she was um, negligently behaving with the she was ignoring the family member, his family member, despite assurance, despite advice. She started disputing. Therefore, therefore, uh, uh, therefore, the family member have lodged a report before the police station, Logangarh. And he used to send gift at the time of marriage, of the delivery of his son, and and despite persuasion to bring her to her matrimonial house, she was she has not left and also filed a complaint under section 498 of the CRPC, which has caused him to commit suicide, and therefore he become physically disabled. Uh, and as such also the respondent started torturing uh, her and thus he would pray for. It is also the case of the respondent that that the she has also filed the respondent filed a applicant wife moved an application for grant of maintenance which are under the domestic violence act which has been rejected, and she is working as Rasoiya cook in the Christian Fellow Hospital and getting salary of rupees 7,000. And thus he would pay for, he has paid for rejection of the application. The respondent examined, respondent examined herself and one Naresh Kumar Sahu and also submitted the document that is Krishi Bhumi Khasra number, Krishi Bhumi, records of the revenue land bearing Khasra Panshala from 19 to 2021, and also started also examined one witness, and the respondent husband examined himself and another witness Sakshi Sagar Kumar Sahu. The learned trial court, after appreciating the evidence and material and the statement of the parties, have granted the maintenance of amount rupees of 1,000, which is being challenged by the applicant before this court. The learned counsel for the applicant would submit that the applicant has suffered injury and he become disabled. Therefore, he has also annexed the copy of disabled certificate issued by the competent authority to substantiate that he is not able to maintain his wife, and and he would further submit to substantiate the submission that if the person is disabled, he cannot maintain his wife. He has referred the judgment of High Court of Karnataka in passed on 5 April 2024 in case of Srimati Priyanka Singh versus Pankaj Singh Sengar.
decided on 5/4/2024. Full stop. Per contra, learned counsel for the respondent would submit that the impugned order is legal and justified, and meager amount of rupees 1,000 has been awarded, which cannot be stayed at Banasda, and it is just and it is on a lower pedestal. Therefore, he would submit that this and the revision may be kindly dismissed. I have heard and counsel for the parties concerning the facts, and also considering the fact, though the respondent has annexed the copy of the disabled certificate, but it does not mean that he cannot maintain himself or cannot earn livelihood. Even the respondent, with the wedlock of applicant and respondent, who is living presently with the applicant, and he is also living with one woman. It cannot be said that the applicant is unable to maintain the wife. Considering this aspect of the matter, and also considering that maintenance amount has been awarded to the respondent wife, which is a meager one of rupees 1,000, which is on a lower side. I am of the view this is a fit case where the criminal revision should have been dismissed. Accordingly, the criminal revision dismissed. If one prayer may be allowed, my lord. According to this judgment, I am not praying that order may be set aside, but 500 rupees may be granted. 500 from my mother, my lord, from the land, क्योंकि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, अरेस्ट वारंट भी नहीं है सर, वेयर आई विल गो। जेल में फोकट में खाना, वहां पे फोकट में खाना, यहाँ पे फोकट में खाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है ऐसे लोगों से। अपनी जिम्मेदारी से आप भूलेंगे नो।